अपनी मिट्टी, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत से जोड़े आजकल। We have Mr. Ashok Malhotra, a very well-known civil engineer who has ventured into the literary field recently by publishing an autobiographical novel. इस सेगमेंट में हम आपको हिस्ट्री के उस दौर में ले चलेंगे जहां कुछ इवेंट्स और पर्सनालिटीज ने हमें हमेशा ही इंस्पायर किया है। नॉस्टैल्जिया के इस सेगमेंट में हम आपकी पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको जयदीप की तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आप सबका हमारे प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। काल का चक्र देखिए कि किस तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और हम हमेशा की तरह हर हफ्ते आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर हाजिर हो जाते हैं। हमारे इस सेगमेंट आर हेरिटेज में मैं पिछले कई हफ्तों से अपने देश में उस दलित वर्ग की बात कर रहा हूं जिन्होंने तमाम मुसीबतों और बेइज्जती सहने के बाद भी उन संतों और पीरों को जन्म दिया है जिनका मुकाम इंडियन फिलॉसफी और भक्ति मूवमेंट में बहुत बड़ा है। मैंने 2 हफ्ते पहले अपने एक प्रोग्राम में संत रविदास जी के बारे में आपके साथ कुछ जानकारी शेयर की थी। गुरु रविदास जी का हमारी भक्ति मूवमेंट में बहुत ऊंचा स्थान है। जिस दलित वर्ग या चमार जाति से वो आए थे और तमाम जिल्लतों के बाद भी बिटर होने की बजाय उनके मुख से हमेशा मीठी बाणी ही निकली। मुझे लगता है कि जो संत या पीर इस दलित वर्ग या नीच जाति से आए, उनका कंट्रीब्यूशन भक्ति मूवमेंट में और हमारी सारी फिलॉसफी में कहीं अधिक है। अगर आप उच्च वर्ग से आए हैं, खाने पीने की कोई किल्लत ना हो, जहां पर समाज में आपका एक रुतबा भी हो, तो आपके मीठे प्रवचनों से उन प्रवचनों का कहीं अधिक रेलेवेंस है जिन्हें ना समाज में इज्जत मिली हो, ना 2 वक्त की रोटी नसीब हुई हो और ना ही एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। दलित वर्ग के संतों और पीरों ने उस वक्त और आज भी समाज में फैली जात पात के खिलाफ लोगों को आगाह किया और यह बताया कि किस तरह से ये जात पात इंसान को इंसान से अलग करती है। दलित वर्ग ने बहुत सारे संतों को जन्म दिया है जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पैदा हुए और अपनी मीठी वाणी का प्रचार किया। उनमें से सुरैयाबाई महार जो महाराष्ट्र से आई, सत्य गोपा खंजर राजस्थान से, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ से, पीपलदास चमार पंजाब से, बालकदास महार महाराष्ट्र से, गुरु घीसलदास घीसा मेरठ से और कल्यार तमिलनाडु से। और दोस्तों, ये गिनती कई 100 और हजारों में है। इन संतों के अलग अलग डेरों पर हजारों की गिनती में लोग वहां जाते हैं, पर मेरा मानना है कि इन डेरों पर सिर्फ एक रिचुअल के तौर पर नहीं जाना चाहिए। हमें उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी मीठी बाणी जो सबका भला चाहती है अपने में उतारनी चाहिए। हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि कितनी मुश्किलों के बावजूद भी इन्होंने अपना मार्ग नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही संतों के बारे में और बात करेंगे। और दोस्तों, the memories are there, the information is there, so I turned it into a kind of a semi-fictional. Okay. The novel is essentially fictional. Are you tired of keeping with today's fluctuating markets? Want to earn 8% interest annually with your principal fully secured by a direct charge on real property? Learn how you can invest your cash, RSP, RESP, or even your TFSA in prime Canadian real estate development. Learn more about the Fortress Real Capital syndicated mortgage investment product. Contact mortgage agent Asim Malhotra at 647-521-3550.
FTS Broker Services License 12367. In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsingh.com. Rajuna Ayurvedic Dietary Supplement made with over 150 raw natural ingredients. Rajuna, trusted by thousands to improve their immune system, eliminating body toxins, purifying blood and fighting deadly diseases. Give yourself an energy boost with a 100% safe, natural Ayurvedic health remedy. Rajuna, for your entire family. Rejuvenate your lifestyle today. Rajuna by SPM Ayur Care. 1-888-732-9935. Rajasthan, the incredible state of India. We are very fortunate to have Mr. Ashok Malhotra with us today. Mr. Malhotra is a civil engineer who has recently ventured into the literary field, and his beautiful autobiographical novel, The Golden Sparrow, has been published. A very warm welcome to our studios and to our show, Mr. Malhotra. Thank you very much, Jaideep. I really appreciate your having me here. Thank you. Coming from a civil engineer background, what really inspired you to write an autobiographical novel like this? Well, this is it's a very good question. Engineer as a novelist, you know. Right. This is very rare, you know. And actually I surprised myself, to tell you frankly. Okay. in writing this novel. It all started actually as a memoir that I wrote about 6 or 7 years ago. Okay. Very short memoir for the benefit of my children and my grandchildren. And it was about 30 or 40 pages long. Okay. Word processed, typewritten, nicely done. And I gave it to a few friends in my office to read, just to, you know, we have been working together for so many years, say this is where I come from, you know. Right. And they all read it, and two of them came back to me and said, you know, this is a very compelling story. And I think you should write a novel. Okay. And I thought they were joking, and I think we all took it, you know, kind of jokingly. So, novel, I mean, when am I going to write a novel? It's a long way, you know, it takes several years to write a novel. Right. And I had written technical books before, but never a novel. Right. But then I started thinking about it, you know, and I said, well, you know, why not try that as a personal challenge, you know? Right. And moreover, my father was a professor of English literature in Lahore and Delhi. And you know, we grew up with like playing with Shakespeare and you know, and the books like that. Playwrights like that. And he said, well, why not try? So what I said, well, let's try and see how to write a novel. I bought some novels of Indian authors, Canadian authors, American authors, just to see how a novel is written, you know. And then I thought the best thing now is to jump in and write. So, but why an autobiographical novel? Well, you know, the memories, you know, at my age, you know, I turned 72 recently. Okay. And at my age, still very young, don't worry. Still very young, yeah. At my age, you begin to think about almost where you came from, you know. Right. And always the memories of Lahore, where I was born, they're always there, you know. It never goes away. So this was the reason actually for writing the memoir, you know. So I said, well, the memories are there, the information is there, so I turned it into a kind of a semi-fictional. Okay. The novel is essentially fictional. It has some milestones which are real. The history is real. So you can call it a historical fiction, you know. Right. So the novel starts in something like in the year 1940. Okay. And it has as the backdrop the World War II and the partition of India. Okay. And there are Indian characters, there are British characters, and there is even a Canadian character.
Okay. And I wanted to bring Canada into it, having lived here for 45 years. Right. And you know, not many people know how long Canadian relationship with India goes. Right. There were a lot of Canadians in India at that time in the 1940s, you know. Right. So I wanted to bring all that together. And so it's a mixture of reality, fiction, history. Very interesting story. I think partition and that trauma has really played a very significant role, or a very important role in making up the personalities after the partition. Personalities like you who have really suffered in those days. You are absolutely right. You see the trauma was so severe, you know, Right. that it just doesn't go away from you. You know, Right. you remember these nights, the dark nights, sleeping on the rooftop with the mosquito nets, and you know the wails of Allahu Akbar, Jo Bole, So Nihal. I still remember it in my memory. You know, Right. Right. and so you don't forget that. You see, and starting from that. You know, we mix some, you know, everything. Of course, I don't remember everything. A lot of stuff I have to make up. This is where the fiction comes in. Right. And it's an exquisite rendition of the story it's a culture and spirituality. You know, every author has a vision when he's writing something. What vision you have in writing an autobiographical novel like this? And as you told me before the interview started, that in fact you have written the second part also of the same novel. I started out in 1940. The story starts in 1940. Right. And this book, you know, finishes in 1950. And the second book starts from 1950 to 74. Okay. So I wanted to. You know, India is in great in news nowadays. You know, as you know, I mean, a lot of things are happening in India, and so I wanted to start from the background from 1940, 1947, 1950. See how the refugees got up and made a life for themselves. Right. How there was explosion of educational institutions. You know, engineering colleges, medical colleges, and then how we people got educated and moved up and came here and did well. Have you launched this book in India also? Well, it is not launched in India in a way. It has been launched online in India also. Okay. The book is available in India on Amazon.in. Okay. And it's available here in Amazon.com, Amazon.ca, Amazon.uk, Japan, all over the world. Okay. And it is also being sold on eBay. I don't know, people are selling used books or what, but I was really surprised to see my book being sold on eBay. You know? Right. So it's available all over the world. And there are people in India who have actually bought. Some books have been sold in India. That's very good. And we would like to show our viewers that this is the book, The Golden Sparrow, which has been published recently. Do you plan to go into the other literary fields of poetry or prose? Well, it's a very good question. I'm very glad that you asked that. Before I started writing novels, Right. I was writing poetry. Is it? Yes, I have written some, I think about 20 poems, which were published in one of our magazines, Des Pradesh. Okay. Shiban Rana, he used to publish that magazine Right. a few years ago, and it was being published for over a period of I think 10 years or something. Right. So in every edition, I used to write a poem. So I used to write poems. Okay. And actually, one of my poems has found a way into the book also. Okay, that's good. Yeah. That's very nice. Yeah. And we wish you all the best, Mr. Malhotra, in your future writings. And we expect a second edition of this book to be out very soon. And thank you so much for coming to our show. Well, thank you very much, Jaideep. I really appreciate that. इसी महीने फरवरी में शेर अली आफरीदी ने ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की अंडमान में हत्या कर दी थी। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. Truth
without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the US. Rajuna Ayurvedic Dietary Supplement, made with over 150 raw natural ingredients. Rajuna, trusted by thousands to improve their immune system, eliminating body toxins, purifying blood and fighting deadly diseases. Give yourself an energy boost with a 100% safe, natural Ayurvedic health remedy. Rajuna, for your entire family. Rejuvenate your lifestyle today. Rajuna by SPM Ayur Care. 1-888-732-9935. आप सबका हमारे प्रोग्राम के इस सेगमेंट अ ट्राइस्ट विद हिस्ट्री यानी इतिहास के पन्नों से मैं हार्दिक स्वागत है। हमारा ये सेगमेंट बेहद इंटरेस्टिंग इवेंट्स से भरा हुआ होता है जिसने हमेशा ही हमें इंस्पायर किया है। आज जिस घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं जो इसी महीने यानी फरवरी 1872 को हुई थी और जिसने शॉक वेव्स पूरे हिंदुस्तान और ब्रिटिशर्स को भेज दिए थे। उन दिनों हिंदुस्तान पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था तो ब्रिटिश वाइसरॉय थे लॉर्ड मेयो। उन दिनों ब्रिटिशर्स अगर किसी को काले पानी की सजा देते थे तो उसे अंडमान के आइलैंड्स में भेज दिया जाता था। लॉर्ड मेयो कुछ इन्हीं प्रिजनर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करने के लिए अंडमान गए हुए थे जहां उनकी हत्या शेर अली आफरीदी ने कर दी थी। शेर अली आफरीदी अपनी लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडमान के आइलैंड्स पर काट रहा था जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस खैबर से आया था और एक वक्त उसने पंजाब आर्म्ड पुलिस को भी ज्वाइन कर लिया था। अपनी बहादुरी और डेडिकेशन से वो ब्रिटिश आर्मी में आया और कुछ ही देर में ब्रिटिश ऑफिसर्स का चहेता भी बन गया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर ने तो उसकी बहादुरी और डेडिकेशन को देखकर उसे एक घोड़ा और एक पिस्तौल भी इनाम में दे दी थी। शेर अली उन सभी कामों में बेहद खरा उतरता था जो भी उसे दिया जाता था। वक्त की अनहोनी देखिए कि एक फैमिली लड़ाई में उसके हाथों अपने एक रिलेटिव की मौत हो गई थी। शेर अली पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हुई, पर शेर अली लगातार ये कहता रहा कि वो बेकसूर है और अपने सेल्फ डिफेंस में उसके रिलेटिव की मौत हो गई थी। कुछ समय के बाद ब्रिटिश जज ने उसकी सज़ा को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया था और उसे अंडमान के जेल में भेज दिया था। शेर अली लगातार अपने आप को बेकसूर कहता रहा और इसी गुस्से में उसने वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। इसी की वजह से शेर अली को फांसी की सज़ा हुई 1873 में। दोस्तों अगले हफ्ते किसी एक ऐसे ही हिस्टोरिकल सफर पर आपको लिए चलेंगे। मैं शायर बदनाम Are you tired of keeping with today's fluctuating markets? Want to earn 8% interest annually with your principal fully secured by a direct charge on real property? Learn how you can invest your cash, RSP, RESP, or even your TFSA in prime Canadian real estate development. Learn more about the Fortress Real Capital Syndicated Mortgage Investment Product. Contact mortgage agent Asim Malhotra at 647-521-3550. FTS Broker Services License 12367. Rajasthan, the incredible state of India. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel.
For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. Sat Shri Akal ji. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद दोस्तों आप सबका नॉस्टैल्जिया में बेहद स्वागत है। हमें बहुत से लोगों के ईमेल्स और फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम को आधे घंटे से बढ़ाकर 1 घंटे का कर देना चाहिए। मैं बेहद शुक्रगुजार हूं आप सबके प्यार और इज़्ज़त अफजाई के लिए। आप हमें कुछ और वक्त दें और हम अपने इस प्रोग्राम को ज़रूर बड़ा करेंगे। दोस्तों हमारी फिल्म इंडस्ट्री में रज़ा मुराद साहब की गहरी आवाज़ और एक्टिंग से कौन वाकिफ़ नहीं है। उनकी एक फिल्म आई थी नमक हराम। उसी फिल्म से एक खूबसूरत नगमा किशोर दा की आवाज़ में आपको सुनवा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप भी इसे ज़रूर पसंद करेंगे। जिंदा हूँ इस तरह के गमे ज़िंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और कुछ चीज मिलेगी टूटा खाली जाम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। चलना था, कांटों पे सोना था, और भी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के काम, हो मैं चला मैं शायर बदनाम। दोस्तों किशोर दा के गाए इस खूबसूरत नगमे के बाद आज के प्रोग्राम को समेटने का इशारा भी हो रहा है। आप इस प्रोग्राम में कुछ और क्या देखना या सुनना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। आपके फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स की
हमें बेहद प्रतीक्षा रहेगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। हमारे सब की तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। आज कल, आज कल, आज कल। मपदनि सनि द प ग म प द नि द प म रे ग म प द प म रे सा ग सा ग ग